मंत्रालय भारत सरकार। Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's see what we have lined up for you this week. Municipal workers hold demonstrations amid political crisis in the illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan. People in Gilgit-Baltistan bear the brunt of chilly winters. Government remains apathetic. Srinagar exhibition displays rare Persian manuscripts. Kathua women derive benefits from mushroom cultivation. And in a section on Incredible India, we'll take you to witness the colourful Sangai festival of Manipur, which was organised after the 3-year pandemic break. People in the illegally occupied Gilgit-Baltistan region had years of disappointment in the form of state discrimination and state atrocities. The people here have outrage against the government sitting in Islamabad for keeping this region underdeveloped and backward. The employees of this municipal corporation carry out the demonstrations as they believe the Pakistan government is systematically exploiting this region in terms of resources. Let's have a look. Scores of employees of local council and municipal corporation staged a demonstration outside the Chief Minister's residence in illegally occupied Gilgit-Baltistan to raise their demands of salaries and allowances at par with their equals in Pakistani provinces. They accused the government of discrimination and said the authorities were deliberately delaying the process for years. Demonstrators said they were severely hit by runaway inflation and the government, which was supposed to provide them a safety net through welfare schemes or allowances, had turned a blind eye to their plight. 1 जुलाई 2022 से जो आम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गिलगित-बल्तिस्तान के सबको 25,000 रुपये हो गए हैं, जबकि 1 जुलाई 2022 से हम वहीं पुरानी सैलरी ही ले रहे हैं 16,000 रुपये, जिससे सर इस महंगाई में हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल में पड़ गया है सर कि हमारा थोड़ा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए हम पहले बार भी आए थे यहाँ पे जब कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। उस वक्त हमें यहाँ से तसल्लियाँ दे के हमें भेजा था, लेकिन अभी दोबारा यहाँ पे अभी कैबिनेट के अंदर मीटिंग चल रही है तो हम यहाँ पे हाजिर हुए। 14 सर 10 सालों से हम लोग ओवर एज होने वाले हैं सर, और हमारा कोई बस और कोई रोज़गार नहीं है। इन इदारों में हम अपनी ड्यूटी सही देते हैं सर, सही टाइम से आप हमारा चेक कर सकते हैं। हम अपनी ड्यूटी में के दौरान कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें भी दूसरे मुलाजिमीन की तरह हमें भी 25,000 मिलना चाहिए। The government employees have been demonstrating against the government for weeks, but to their dismay, no action has been taken thus far. The government has time and again made hollow promises, but has never followed through. The employees, however, are determined this time and say they will not give in to any form of tactic or intimidation. Their numbers are growing with every rising sun, and the strikes are snowballing into massive protests. Demonstrators present in front of CM's house said people at the same position in Pakistan were earning as much as 60% more than what they did. मैं खुद तो तकरीबन ये 13-14 साल में मेरी सर्विस हुई। वहीं पहले तो हम सबसे पहले तो हम 4,000 पे करते थे, उसके बाद 7,000 हो गई, फिर उसके बाद 16,000। अब ये 16,000 से आगे वज़ीर-ए-आज़म ने भी लेटर दिया है और वज़ीर आला ने भी लेटर दिया है, और हमारा 25,000 पूरा नहीं होता है। इसमें रुकावट ये है कि भाई हमारा सेक्रेटरी खुद है, इधर आकर ब्रीफिंग नहीं देते थे। भाई हर कम्युनिटी से पहले आकर इधर ब्रीफिंग देना चाहिए कि भाई हमारे मुलाजिम है, सबको पक्का किए, हमारे मुलाजिम पक्का क्यों नहीं हो रहे हैं। This is not an exclusive case of discrimination in the illegally occupied Gilgit-Baltistan. Pakistan, which has held the region for over 7 decades, has meted out a second-class citizen treatment to the natives of this region. While some say it is part of Pakistan's state policy to keep the people of
The fact in the end remains that people in this region are suffering and there appears no light at the end of the tunnel. Winter season, especially the period between the months of December to February, is harsh in the illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan. On one hand, heavy snowfall makes it difficult for the citizens to commute. On the other, authorities turn a blind eye towards the needs of the citizens, making day-to-day survival even more challenging. The situation is no different this winter. The illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan, which is perhaps one of the most picturesque regions of southern Asia, gets covered in a blanket of snow on the arrival of the winter season. However, for the locals of the region, the onset of winter becomes worrisome due to the lack of attention of the government, which fails to provide basic necessities to its citizens. As the freezing season takes over the region steadily, people in the Astor district of Gilgit-Baltistan have started facing issues like shortage of wheat, rise in prices of wood, and poor condition of roads. यहाँ पर काफ़ी सर्दियों में काफ़ी मुश्किलात हैं। यहाँ पर तकरीबन 3 फुट 2 फुट बर्फ़ पड़ती है। आम तरफ का कोई बंदोबस्त नहीं है, रोड सारा जाम होता है। तो यहाँ तकरीबन गवर्नमेंट ने लकड़ियों के ऊपर भी काफ़ी वो किया हुआ है, पाबंदी लगाई हुई है। लोग मैसूर हैं, परेशान हाल हैं। सब्सिडी जो थी वो भी ख़त्म किया हुआ है, लोग परेशान हैं, गंदम नहीं मिल रहा है। तो कम से कम हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि 3-3 महीनों से यहाँ गंदम का शदीद बुहरान है। Winters are bone-chilling in Gilgit-Baltistan as the temperature drops to zero in the region. With the absence of even the basic facilities and the continuous negligence of the government, citizens of the region have been reeling under the cold weather for years. Pakistani authorities have failed to provide permanent accommodation to residents in Astor who are bearing the brunt of the seasonal change. The government has failed to provide assistance to the citizens and is only concerned about filling its own coffers. वज़ीर आला साहब को हमने यहाँ से जितवाया, लेकिन उसका रिजल्ट उसने ये दिया कि अव्वल तो वो दौरे ही नहीं करता है। जब दौरा करता है तो उस वक्त PWD वाले थोड़ा सा उसके जम को ठीक करते हैं, बाकी रोड का सत्यानाश है। वो रोड बनाने का काबिल ही नहीं है, कोई कुछ काम नहीं किया है। हमारे वज़ीर आला साहब ने एक ईंट भी नहीं रखा है आज तक। जब से ये 2 साल तकरीबन इनकी हुकूमत गुजर चुकी है, अस्टोर में कोई एक टेंडर आज की डेट तक दिखाए कुछ। तो हम वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करते हैं एज हमारे एरिया के होने के कि वो हमारे इलाके की तरफ तवज्जो दे दें। इस वक्त हम मौजा हरचू रोया यूनियन का ये आखिरी गांव है, यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। इस इलाके में 2002 में और फिर 2012 में ख़तरनाक किस्म का ज़लज़ला आया। तो जो माहिरीन की राय के मुताबिक बोंजी से लेकर यहाँ तक हरचो तक का ये इलाका वल्नरेबल इलाका है और यहाँ पे रहने वाले लोगों के पास ज़लज़ला प्रूफ घर तो नहीं है, लेकिन ना हुकूमत ने इस तरह के कोई इक़दाम किए कि लोगों को कोई सैंपल बना के दें ताकि वो ज़लज़ला प्रूफ घर बना सकें। The people of the illegally occupied region of Gilgit-Baltistan are deprived of the most basic necessities as well as basic rights. The systematic Pakistani authorities have turned the most beautiful region of South Asia into a neglected and backward one. Well, from the 14th century to the late 19th century, Persian was the administrative language of Jammu and Kashmir. It was also the primary language in which all historical, religious and political discourses were written in the territory. Kashmir has its own galaxy of Persian writers and poets who produced masterpieces. In order to educate Kashmiri people regarding the role of Persian in shaping Kashmir's history and culture, a rare exhibition of Persian manuscripts was organized. Take a look.
Kashmiri culture and history contains treasures of Persian literature which is almost totally obliterated from the present realm. Taking back to the ancient times and preserving the Persian texts from the ancient Kashmiri era, the Indian National Trust of Art, Culture and Heritages organized an exhibition where the rare manuscripts of the famous Persian poet, writer and researcher Khwaja Muhammad Amin Darab were put on display. During the exhibition, manuscripts along with books of Khwaja Muhammad Darab, who was considered the last Persian poet of the valley, were exhibited. इस एग्जीबिशन के दो तीन मकासद हैं हमारे लिए. एक तो खैर ये पर्सनल आर्काइव्स हैं कश्मीर के आखिरी फारसी शायर की, जिसका नाम मोहम्मद अमीन दाराब था. ये 1880 में पैदा हुए, 1890 में 1980 के करीब इनकी वफात हुई. कश्मीर में फ़ारसी ज़बान जो है 500 साल तक हमारी सरकारी ज़बान रही. सरकारी ज़बान के साथ साथ ये हमारी ट्रेड कॉमर्स की भी ज़बान रही, कॉरस्पॉन्डेंस उसी में है. उसके बाद हमारे फेथ की भी ज़बान रही. ये माइंड का गार्डन है. जिसको इनक्लिनेशन हो अदब की तरफ, स्कॉलरशिप की तरफ, रिटन वर्ड की तरफ, उसके लिए दाराब का जो ये पर्सनल आर्काइव है ये मुगल बाग से कम नहीं है. Serving as an ideal platform for the revival of the Persian language and literature in the territory, the exhibition was titled Insha-e Darab. Organized at the Amar Singh Club in the Sonwar area of Srinagar, 33 rare manuscripts along with 11 books of Khwaja Muhammad Darab were put on display at the event. Khwaja Muhammad Darab is considered to be the last Persian poet of the valley. The exhibition was attended by a large number of intellectuals and literature enthusiasts. ये जो छोटी चीजें हैं जो कंप्यूटर ने नोट नहीं की है लेकिन ये कागजों में है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये निकाहनामा हो या फिर इवन नील आर्मस्ट्रॉन्ग से बातें हो या दीवाने साहिब हो, हम देख सकते हैं कि हमारा कल्चर का क्या वैल्यू था, जो कि हम यस ऑफ कोर्स द यंग जनरेशन इज फॉरगेटिंग, वो हम भूल रहे हैं. लेकिन ये आई थिंक हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये हम प्रिजर्व करें, क्योंकि हमें इससे फर्स्ट ऑफ ऑल सीखने को बहुत कुछ मिलता है. वी कैन सी कि उस ज़माने में भी लोग कितने इंटेलेक्चुअल थे, वो क्या बातें थी, कैसी छोटी बड़ी चीज़ें को प्रिजर्व किया जाता था, क्या कम्युनिकेशन होता था. मैं बहुत मुतासिर हुआ ये जानकर कि मोहम्मद अमीन दाराब साहब हमारे लास्ट पर्शियन पोइट है यहाँ पे. तो एक ये हमारा खुद का सरमाया है. देखिए हम इससे हमें ये मालूम नहीं था, हम पहली बार आ रहे हैं कि और ये इनका कलाम जान रहे हैं, इनकी पोइट्री, इनका प्रोज कलेक्शन देख रहे हैं, तो हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि इन्होंने कितना काम किया है और छुपा हुआ था ये काम. तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिन्होंने भी लिया है, इंटैक्ट में लिया है. प्लेटफॉर्म हमें मिलता है हम जैसे नौजवानों के कि हम इस डायरेक्शन में जाएं और यहाँ पे रिसर्च करने का इनका एक मतलब इस फील्ड में पर्शियन में ज़्यादातर नहीं होता है, तो एक रास्ता मिल जाता है कि हम जो पर्शियन जो है ये इस चीज़ से, इस अमल से, इस इक़दाम से वो रिवाइव हो सकता है. The Persian language reached its peak in Kashmir during the Mughal rule, but faded over the course of time. It is through the exhibitions like these that the younger generations keep on learning about the rich past and literature. These kinds of exhibitions are also useful in taking a walk in the rich past of Jammu and Kashmir and acknowledging the different cultures and societies that have played a major role in shaping today's literature and lifestyle in the territory. This exhibition is important for the upcoming generation to know about their Kashmiri roots and the fact that not only Iran but great Persian poets have emerged from Jammu and Kashmir as well. India, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has taken legacy forward and entrusted women with responsibilities that they are capable of shouldering in the region of Jammu and Kashmir. With the latest technological interventions of the UT administration as well as subsidies for mushroom growers, mushroom production has registered a substantial increase across this region. Women here are very much glad to start their own group and are working collectively. Let's have a look.
The Jammu and Kashmir government is emphasizing stakeholders for encouraging and promoting mushroom cultivation and potential entrepreneurship for the youth in the Union Territory. Kathua district is all set to take mushroom cultivation to next level. The Department of Agriculture Production and Farmers Welfare encourages women to do mushroom cultivation so that they can become self-dependent and self-reliant. हमने 257 जो यहाँ ब्लॉक हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, उन सब में हमने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं और इसी के चलते हुए जो बॉर्डर का हमारा हीरानगर ब्लॉक है, इसमें हमारे 11 ग्रुप काम कर रहे हैं महिलाओं के, जिनको मशरूम की कल्टीवेशन के लिए पिछले साल से प्रेरित किया गया। हमने उनको पिछले साल 3 और इस साल 4 मशरूम शेड जिनकी 75,000 रुपये हमने उनको सब्सिडी भी दी और इस साल उन महिलाओं ने 1000 से 1500 बैग वहाँ लगाए और आज की डेट में कम से कम 80 से 1 क्विंटल तक एक शेड से एक महिला अपना मशरूम निकाल रही है और मार्केट में बेच रही है। Mushroom production is at an all-time high across Jammu and Kashmir in the past 2 years, to the extent that it is emerging as a new cash crop in the territory. The government says that mushroom cultivation is a focus area in the region and the growers are provided with quality seeds and trained in scientific cultivation techniques. The administration's subsidy and technical knowledge are making cultivation profitable for growers. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इन्होंने फिर हमें बताया कि आप मशरूम का काम करो, तो हमें पता ही नहीं था इसके बारे में, कुछ भी पता नहीं था कि, तो हमें शौक भी है बिजनेस, महिलाएं मतलब करें तो कितना अच्छा है। एक बंदा घर में कमाता है तो पैसे की कमी आती है, बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन कितनी महंगी है, तो चलो इन्होंने हमें बताया, गाइडलाइन दी, तो हमें चले इनकी। कितने बॉक्स ये आपने शुरू किया बॉक्स से और अब कहाँ तक पहुँचे हैं? पिछले साल हमने 850 मतलब बैग डाला। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने बड़ी हमारी हेल्प की, पूरा हमें बताया कि कैसे कैसे काम करना है, पूरा दिन रात इन्होंने भी हमारे साथ मतलब किया, पूरा बताया, तो अच्छी फसल हुई ये मतलब ये मशरूम की ये। तो इस साल तो हमने बढ़ाए हैं, 200-300 बैग बढ़ाया हमने। 1000 प्लस? हाँ जी, 1000 प्लस किया है। The women in the region are glad to start their own self-help group and are working collectively. They are doing all the work by themselves, like from cultivating mushrooms to packing them for the sale in the market. The others are also encouraged to join these type of self-help groups and get involved in agriculture allied works, as they have no other job after completing domestic work. हमारा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप 1 साल हो गया तैयार हुए हुए, वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने हमें बोला कि आप ग्रुप बनाओ, आपका हम सपोर्ट करेंगे, तो हमने बनाया और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तब से 1 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी उन्होंने कहा कि शेड बनाओ, ये मशरूम शेड तैयार करो, तो हमने वो भी किया और हमने अभी मशरूम तैयार हो गई है हमारी, अभी चल रही है, तो और बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। चीफ साहब जी वो भी आए थे, वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, वो एमपी साहब भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और जो सवदेश खजूरिया सर ये भी हमारे घर आते जाते रहते हैं, मतलब कि जब से हमने काम शुरू किया आते जाते रहते हैं, और हमें इतना मुनाफा मिल रहा है ना कि आप अभी शुरुआत ही है समझो। हम चाहते हैं कि हम इससे आगे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेड तैयार करें और सभी औरतों को हम तैयार करें कि हमारे साथ काम करें। The production is showing an increasing trend with new growers associated with the self-help group.
The administration is focusing on using high-end technology and upgraded structures. Mushrooms here are grown under a controlled atmosphere as well as under a natural system, as they are temperature and humidity dependent. The government machinery is trying to connect with more women who are unemployed in the region and make them successful entrepreneurs by adding them to the mushroom cultivation business. The revolution of women in self-dependent as well as in mushroom cultivation is seen in such a way that it motivates the other women to do the same for their upliftment. The northeastern region of India is abundant of natural resources, which makes it one of the most picturesque tourism sites in the country. Every year, the government of Manipur organizes a cultural extravaganza named the Sangai Festival, which is a beautiful show of the state's art and culture and promotes Manipur as a world-class tourist destination. This year, the festival returned to its full glory after the 2-year pandemic break. Dressed in colorful attires, people of different tribal communities gather together to celebrate the colorful Sangai festival. Also known as the Festival of Oneness among locals, the festival is being organized by the government of Manipur for the last 12 years with the motive to promote the state as a world-class tourism destination. Named after the state animal Sangai, which is an endemic and endangered species as deer found only in Manipur, this year the 10-day event returned to its full glory after a 2-year pandemic break. To all the people of the state, all the people of India and abroad, and sending my best wishes to visit and enjoy the Sangai festival. Many even eminent personalities, even including not only the union ministers and chairmen, many film star celebrities also visiting here. Around 33 tribal communities from the state participated in the festival and displayed a glimpse of their culture and traditions. Usually the festival is organized in Imphal, but this year authorities decided to organize the festival at 13 different places across 6 districts, bringing together Manipuri culture, art and traditions to strengthen the socio-economic milieu. Marking the start of the festival, a mini marathon named Sangai Run was also organized. Participants began their run from the Khuman Lampak Sports Complex and passed through areas like Lamlong Bazaar, Kongba Bazaar, Pishumthong, Kei Shampat. बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत 3 साल कोविड की वजह से पूरा बंद रह चुके हैं, तो अभी कोविड थोड़ा सुधरने के बाद कोविड का जो हम पूरा देश में पूरा वर्ल्ड में बहुत दुखी टाइम था, तो अभी थोड़ा सुधरा है। तो उसमें अभी संगाई हमारा जो संगाई हर साल होते हैं संगाई फेस्टिवल, तो काफ़ी 3 साल से संगाई फेस्टिवल ठीक से हो नहीं रहा है। तो अभी अब तो कोविड के बाद ये संगाई फेस्टिवल अभी शुरू हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत एक्साइटेड है। जो संगाई रन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरा मणिपुर बहुत खुश है और सब लोग रेडी है पार्टिसिपेट करने के लिए संगाई फेस्टिवल। The primary celebration of the festival was held at Sangai Ethnic Park in Moirang, where multiple huts showcase the culture and lifestyle of different indigenous tribes of Manipur. The festival also serves as a platform for showcasing the state's handicrafts,
fine arts, indigenous sports, cuisine, music, eco and adventure sports. सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का जो है शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद जो है यहाँ हमारे मोइरांग केंद्र के अंदर यानी मोइरांग खुनो में जो है संगाई फेस्टिवल जो हुआ है, सबसे बड़ी खुशी है हमारे अंदर। और हमारे मतलब जो है मोइरांग के पब्लिक लोग भी बहुत खुशी होता है, और खासकर हमारे जो है मोइरांग केंद्र के अंदर जितने भी मुसलमान हैं और ये भी खुश होता है। और इस जो है मतलब संगाई फेस्टिवल की वजह से जो है जितने भी रोड वगैरह जो मतलब डेवलपमेंट का जो काम किया है, ये भी बहुत खुशी हुआ है। खासकर हमारे ऑनरेबल सीएम श्री एन बीरेन्द्र सिंह को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। As a part of the festival, the Manipur International Polo Festival was also organized at the polo ground in Imphal. This was the 14th edition of the festival. A total of 5 teams, including those from the United States of America and England, competed with each other for the #1 spot. In front of the goal, but through for the score. Organized by the Polo Association, the event is held under the aegis of Manipur Horse Riding and Polo Association. India is in control of The competition attracts visitors from all over India and abroad. in front of the goal, but through for the score. This had very humble beginnings. Now we have reached a certain stage where the efforts of the organization and the government of Manipur has been recognized all over the world. And we have now teams coming back, players coming back, families coming back, and I'm sure that when the good times return, perhaps, God willing, by next year, our effort will bear more fruit and there will be more greater participation. By showcasing the culture, diversity, skills and talents of different tribal groups at the Sangai Festival, not only Manipur's tourism has got a boost, but has indeed generated a lot of employment opportunities for the citizens of the state. Well, that's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज #1 सीमेंट।